Look at this. These are the essays here, and they are categorized on the basis of different types. Like the first one is discuss both views. So this one is about discussing both the views. While recruiting a new employee, the employer should pay more attention to their personal qualities rather than qualifications and experience. It says, to what extent do you agree or disagree? So this is, to what extent do you agree or disagree? It is not asking, do you agree or disagree? It is asking, to what extent do you agree or disagree? So in these kind of essays, you have got freedom to choose both sides. Let's look at another topic. In last 20 years, there have been significant developments in the field of information technology. For example, World Wide Web, communication by email. However, future developments in IT are likely to have more negative effects than positive. It's talking about the future developments, right? Yeah. Again, the question is discuss both views and give your opinion. Let me just take you to the essay itself. So look, this is the first one, right? It says discuss both views types of essays. The first category of essay is where you are supposed to discuss both views. And the kind of statements you will get there is are, to what extent do you agree or disagree? Or it could be like, to what, yeah, it is again, to what extent do you agree or disagree? The same essay is there. Yeah, if you look at this, to what extent do you agree or disagree with this view? So this is one standard statement which you'll find in many essays. Okay, like let me check this one again. It says discuss both views and give your opinion, right? So all these essays fall in the same category, right? What do you think about now? This is again, what do you think is also mixed up. It's not saying like take one side or something. You can always take two sides also. Discuss both views. So it's very clearly saying discuss both views. Again, if I look at this, discuss both views and give your opinion. Now, all these essays, the ones which we have looked at, all fall under one category, which is discuss both views. All right. Now, if there are certain specific types of essays that you are going to get in IELTS, it makes sense to practice one particular type of essay and develop mastery in it, then move on to next type of essay, then move on to next type of essay. Because it's like when you master one particular aspect of writing or one particular style of writing, it becomes easy for you to pick up another style also. If you keep on changing the topics, it becomes difficult to focus. So that is what this document has done. If you look at the initial division of essays, all these essays are divided into different categories. Okay, the first few essays are discuss both views. Now, how to use these essays as a way to learn? Okay, now irrespective of the nature of the topic, you can all use all these phrases in your writing. What I'm trying to say is, learn all these phrases, right? So irrespective of the topic you get, irrespective of the type of essay you are supposed to write or the side you support, you can use these phrases, right? These are some standard phrases for writing any topic or writing on any topic. If the nature of the question is discuss both views, or to what extent do you agree or disagree, which means we can have a sort of template with us. As soon as we get the question which says discuss both views, you should have a clear list of phrases which could be used to depict that topic, right? Let's take some examples and let's see how we. Sir, I wanted to ask one Yeah. thing. Yes. Yeah, go ahead, go ahead. Yeah, sir, in the questions which says to what extent do you agree or disagree, in those types of questions we can simply choose uh, one side. Yes, Is yes, that right? yes. You have the option And of we can choosing one. write the whole essay on that one side. Am Yes, I right? yes, you are But right. in both views, in discuss both the views and give your opinion. In those types of essays, we have to discuss both the sides and then choose one side. Is That that is that is absolutely correct. In this, okay? you have So got a there's choice. a fine difference between them. Yes, yes. There is a fine Oh, difference between them.
You're right. Okay. Okay. So in this, All you right. have got freedom to choose the side because it says to what extent. So it could be like you turn it into an agree disagree type of essay, and you can also discuss both the sides and tell that to a certain extent both the sides have their own pluses and minuses. So yes, there is a Yeah. subtle difference as you pointed out. Yeah. Now let's see. Look at these phrases. There are contrasting views. Now this is one phrase which can be used in any essay. Okay, there are contrasting views about the criteria to choose the right candidate. So you can always use this at as the starting point. Let me just write down a few more phrases which could be used in such a situation. There are contrasting views, right? There is one more way of depicting a little bit of division. It is the debate over Oh, the role of experience and education is not yet settled. So again, you are trying to say that it is a very controversial topic, or it has got pluses and minuses on both sides. The debate over the role of experience and education is not yet settled. The debate over the precedence of, or the debate over, simply you can say this is also fine. The debate over the role of, over experience and education is not yet settled. Now see, this statement is a little incomplete, but the beauty of this statement is it is very punchy. The debate over experience and education is not yet, correct. experience versus education, let me make it like this. So this becomes a little more fighting kind of thing. The debate over experience versus education is not yet settled. And you can then expand it. While some people say that experience is more important to consider while recruiting an employee, others say that educational qualifications are more important. Like this, you can further tell, you are bringing the context in the second sentence. So while some people say that experience takes precedence. Yeah, experience is more important while recruiting an employee. Others say that educational qualifications are more important. Now you may say I have repeated the word more important, but then sometimes repetition of word is a good idea. Why? Because it brings consistency in thinking. You don't have to showcase your vocabulary all the time, right? But this makes it very parallel. Somebody who reads it relates it with it very easily. While some people say that experience is important, and other not, while I'll still make it like this only, because I want to make it very punchy. While some people say that experience is important, others say that education are more important. uh, um, yeah, let me like it like this itself, because the context is more or less set in the question itself, so you don't have to tell everything. I mean, the examiner would already know the topic. The debate over while some people say this, others say this. This essay will discuss both views and argue that, and you can tell your view there, argue that experience is uh, more is more important. Yeah, argue that, let's use the same words as they are in the question. Argue that uh, employer should pay more attention to, oh, so personal qualities or education. Yes, education. uh, so you have to change it. I didn't read it. Debate over personal qualities
I committed a mistake there. Personal qualities versus education and experience. Now, see, I just want to highlight this because this is the point which is the cause of debate versus. So, this is like a topic. This is not yet settled, right? While some people say that uh, personal qualities, I'll have to repeat it, there is no choice. Personal qualities, I can always put it in so that, every time when I'm writing it, it is clear initially when I repeat this that this is the topic or the agenda. Is more brothers say that educational qualifications and experience. So this is one unit, it also tells that this whole thing is one unit. It's not Yeah. that they are two things. They are I mean, this is the one side of the argument are more important. This essay will discuss both views and that, argue that. Now, see, I am a seasoned essay writer. I consider myself to be a master. And if I do not pay attention, I commit so many mistakes, you can see. It's very easy for anyone to get carried away and start thinking that I am a pro and I will not commit any mistake. This is the biggest mistake that writers think that they are all perfect. There is nothing like perfection. You will always remain a student or a learner as far as presenting your ideas to somebody is concerned. We'll discuss both views and argue that employers should pay more attention to qualifications and experience, right? So this is how you can write your introduction, and these phrases come very handy. Now look at this. uh, uh, this I have written one phrase. Out of this, half the phrases are the one which I will write use in every essay. The debate over da 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 over da versus da 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 is not yet settled. Now this is the standard phrase, right? Whenever you want to introduce a controversy or whenever you want to say that both the things are important, you can use this kind of structure. While some people say that personal qualities, qualities are, it should be are, right? Because personal qualities are. Look at this. This is the like fifth, sixth error which I have made in this sentence, and I just wrote one paragraph. Others say that educational qualification and experience are more important. This essay will discuss both views and argue that an employer or employers that an employer should pay more attention to qualifications. So these are some standard structures. This essay will discuss both views and argue that. This is again a standard structure. So if you are equipped with these standard structures while writing an essay, you can write on any topic, isn't it? All that would remain, you would have a skeleton ready with you. All that you would need is just fill up the blanks in that skeleton and your essay will be ready. That's what is my vision for you, and that's what I want you to also plan, that you should have the skeleton ready with you and you should just focus on thinking about the, because when you go with a skeleton it becomes very easy for you to write an essay, isn't it? You already Yes. know these are the words. All you have to do is, Acha, what is my argument? What do I want to say? And you can use it. So this is how, yeah, I'll just take it down. So this was basically the introduction, and I wrote one more introduction. So this is what it is. This is the whole essay, right? There are strong reasons to say that qualification experience deserve higher merit. Now see, this guy is very clear. Qualification experience deserve higher merit. So if they deserve higher merit, then again, if you are talking about this as a unit, then you can always put it in a single inverted commas like this. Play more. The first reason is for, so all these words which are highlighted are the words which can be used in any essay. And as Sadaf, you have started doing after every paragraph, you sum it up saying that in nutshell. After writing every paragraph, you can write the gist of that paragraph
in short. So in nutshell is a very good phrase which you can use at the end of the paragraph, and you can tell what exactly you said there, right? I So think it is in a nutshell. In a yeah, in a nutshell. And if you, yeah, use it figuratively, you can say in nutshell. Hmm. Both of them are acceptable, because in nutshell means you are talking in a, in brief. It is not a Yeah, physical nutshell, yeah, but yeah. then I will like to check it now since you have raised this. I have checked it actually. You checked It it. is, Okay, yes, okay. Then it is in a nutshell yes, itself. Sometimes yes, there is a very pedantic approach towards writing, and you have to be very particular about what you use, especially when they are these idiomatic expressions. yes, yes, they cut marks on that. Yes. Further experience in the field helps a person to sharpen the skills they lack. So, you are just elaborating on the whole thing, and your essay is ready. Okay. So this is what happens. I mean, this is the way I would like you to focus. And like many people like Sadaf have already developed this skill. So whenever they write, they use these standard phrases. Hmm? Like for example, look at this. Information technology is like a double-edged sword. So this is again a phrase which you can use to develop your own writing. Double-edged sword means something which has got positive as well as negative aspects. So when you go to any essay, how should you read that essay? You should actually focus on the new phrases which you find there. Like, you know, uh, and I've highlighted them here. They're like, for example, whenever you draft your arguments, you can always say the first reason is that. So this is the standard way of telling your argument. The first reason is that experience of undergoing training helps to instill and develop the necessary skills in a candidate. So it helps you to develop skills. And then you are giving an example. I'll give you a structure which you can follow to draft your paragraphs. Whenever you write a paragraph, you can follow this structure. This structure is called as structure of 5 C's. What are those 5 C's? Claim, context, concrete evidence, commentary, and conclusion. 5 C's: claim, context, concrete evidence, commentary, and conclusion. Right? Like, for example, I want to say that experience and qualifications are important. Right? So, this is actually nothing but a claim. What is a claim? What do you mean by a claim? Claim is That nothing with a qualification. topic statement. Yeah. It is the topic statement or the first statement of a paragraph. Right? It is a sentence which is yet to be substantiated with examples and experience, examples and explanation. Substantiated, ये T बोल रहा है क्या? Yeah, with examples and an explanation. So that is a claim. Claim मतलब क्या? Claim मतलब कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ. अब भैया मैंने बोल दिया मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा ना कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ. तो भैया उसके जैसे नाटक करके बताओ. तो मैं एग्जांपल दूंगा, देखो कितने आदमी थे. नहीं, ये तो गब्बर सिंह हो गया, सॉरी. सो आई हैव टू एक्ट लाइक अमिताभ बच्चन एंड टेल यू. हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है, नहीं जो भी है. सो वट एवर आर द लाइन्स आई हैव टू शो, आई हैव टू गिव यू एग्जाम्पल दैट आई एम अमिताभ बच्चन, राइट? So claim is a statement which is yet to be substantiated with some examples and explanation. After writing claim, what should you write? You should set a context, माहौल बनाओ. Okay, how do you make माहौल? You make mahal by using these kind of statements. Like, कहाँ गया देखते हैं यहाँ पे. The first, so sometimes you come straight to the point. कई बार हम context set नहीं करते. There are strong reasons to suggest that qualifications and experience deserve higher merit than personal qualities. इसमें थोड़ा सा बोल सकते हो that most of the recruiters check for a person's experience in the similar field when they want to hire a person. क्या कर रहे हो आप? Context set कर रहे हो, माहौल बना रहे हो. Right? So after the claim, you will set a context. You can write 1 or 2 lines, or you can come straight to the example. So sometimes context
एंड कॉन्क्रीट एविडेंस में गो टुगेदर, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, देख रहे हो आप, सीधे सीधे वो एग्जाम्पल भी उतर आया, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्लेम के साथ में थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन में बना चुके हैं, so you don't have to go for creating a context separately. All right, so the first reason, so you can, then you have to give concrete evidence. Concrete evidence मतलब अपनी बात को बताने के लिए you give an evidence. Then you write a little bit of commentary. What is commentary? थोड़ा सा ज्ञान. The first reason is, for example, ये तो वही चल रहा है, similarly engineers, so sometimes in the commentary you give some extra examples itself. It's more like a commentary or commenting on that particular claim, right? It could be in the form of an example itself. Like इसको हम commentary और conclusion मान सकते हैं. These experiences help them to learn the necessary aspects of the profession. अब इसको आप conclude करने के बाद बोल सकते हो कि no wonder many employers, so this is conclusion, pay higher, yeah, consider experience to be the most important thing while recruiting an employee, right? So this is what, this is the conclusion. ठीक है, तो हर पैराग्राफ की पैकेजिंग तैयार है ना, जैसे 5 लेयर में हमारा वो नहीं बनता केक, पहला लेयर बेस, दूसरा लेयर क्रीम, तीसरा लेयर लड्डू, चौथा लेयर ये वो जो भी आप डालते हो, मैंने केक नहीं बनाया, बट यस यू हैव टू राइट इट इन दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर. All right, claim, context, concrete evidence, commentary, and then conclusion. But it's not necessary that you have to write it like this. You know, this is just a guideline how to structure a paragraph. किसी पैराग्राफ को कैसे स्ट्रक्चर करो, तो पहले अमिताभ बच्चन की क्लेम कर दो, देयर आर स्ट्रॉन्ग रीजंस टू सजेस्ट, भैया बहुत बड़े बड़े रीजन है, तो ये क्या है, ये क्लेम है. फिर क्या कर रहे हो आप, कमेंट्री और कॉन्क्रीट एविडेंस दे रहे हो, लास्ट में क्या कर रहे हो, इसी बात को समअप करने के लिए इन अ नटशेल वरना वर्डशेल मार के बोल रहे हो जी ये इसको मैंने समअप कर दिया. लाइक दिस इफ यू स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ, everybody would be able to relate to what you said and you would have some road, some guideline in your mind कि भैया ऐसे लिखना है. पहले क्या लिखें पैराग्राफ के अंदर, तो क्लेम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, like this, isn't it? We get lost when we don't know what to do. ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसा रास्ता कट रहा है, मुझे नहीं पता लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं कि खड़े रहूं. So when you very clearly know that first you have to write a claim, then context, then concrete evidence, then commentary, then conclusion, you can always structure your paragraphs very nicely. This is how you can go through the essays and see that every paragraph is structured like that. On the other hand, personal qualities can just make an individual ready, can make an individual, can just के बदले can only बोलते हैं, only make an individual ready to learn the new skills. कि भैया इसके जरिए तो न्यू स्किल ही सीख सकते हो, मतलब रेडी हो जाते हो अगर तुम्हारी अच्छी क्वालिटी है कोई तो. कैसे, इफ ही और शी डज नॉट कम विद नेसेसरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, देयर इज ब्लीक चांस ऑफ हिम और वर्किंग एफिशिएंटली एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स. मतलब अगर आप अच्छे अच्छे फिजिक अच्छी है तो प्लेयर बन सकते हो, लेकिन ऐसे ना कि सीधे जाके छक्के मारने लग जाओगे. so that's what he is trying to prove the other point incorrect, so that the first point which he said seems to be the right one. So yeah, he's saying that personal qualities do not, because उसका एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो ये प्रूव करना चाह रहा है कि पर्सनल क्वालिटीज से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से फर्क पड़ता है. तो एज सच उसमें टॉपिक में ये स्कोप है कि आप एक साइड ले सकते हो, तो इसने वो साइड लिया और उसको पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया. So when you read these essays with this kind of perspective, you will be able to understand how to write it. Now, how many of you have already written this essay after reading it? Yes, I have done. You have written. Vikas, I have you already written done this? so. You have Yes, also sir. written. Very good. Now, in the same way, if you keep on analyzing every essay, कि भैया ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के बारे में क्या बोला गया है, इसमें ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं जो हर ऐसे में यूज हो सकते हैं, और इसका क्या स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या है कि देखो कोई भी काम करने का सिर्फ
एक ही तरीका नहीं है। यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो 5 रोड हो सकती हैं जिससे आप दिल्ली पहुंच जाओ। अब मैं बोलूँ जी मेरी रोड ही बहुत अच्छी है, और बगल वाला बोले जी उसकी रोड बहुत अच्छी है, आपने कोई तीसरा ट्रेनर का कोई वीडियो देखा, बोले जी इसकी भी रोड बड़ी अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी ही रोड बहुत अच्छी है या उसकी ही बहुत अच्छी है, तो हर एक के 4 अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, और उसी को पकड़ के रखना है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसे लिखने के, और बहुत सारे ऐसे 8 बैंड लेके आ सकते हैं, 9 बैंड ला सकते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका अपनाना है जो कि आपके लिए बहुत ईजी है, और जो मतलब मेरे को भी इजी हो, आसान हो, जिसको चेक करना। ठीक है। कई लोग होते हैं बड़े आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं, वो सोचते हैं हमें ये कुछ नहीं करना है, क्या होता है क्लेम, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्क्रीट एविडेंस, कमेंट्री, कंक्लूजन, वो तलवार निकाली हो गए शुरू, चलो जी ऐसे ही तो लिखना है, दनादन 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 लिख डालते हैं, बोले जी चलो चेक करो बताओ मार्क्स कैसे आ गए। तो तुक्के से कभी अच्छा लिख डालते हैं, कभी ऐसे ही निकल जाता है, तो पता लगता है कभी मार्क्स आ गए कभी नहीं आए। सदफ हंस रही है, पहले ऐसे ही लिखती थी लग रहा है ना। Sir, you know it better than me. तो वो तुक्का वाला खेल नहीं करना है हमें। हमें ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेके चलना है कि चलो जी, क्योंकि इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट से ज्यादा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। कि आप अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, कि अगले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसने पूछा ईस्ट, आपने जवाब दे दिया वेस्ट, तो हो गया हैप्पी बर्थडे। सो यू हैव टू बी वेरी consistent in your approach towards writing. First of all, you have to understand the structure of the essay very clearly. What is the nature of it? चलो एक दो जरा, अब ये तो सारे के सारे ऐसे जो हैं दे आर ऑफ वन टाइप, जहाँ पे बोला गया है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसमें आप ये सारे जो हाईलाइटेड फ्रेजेस हैं इनको यूज कर सकते हैं, जैसे डबल एज स्वॉर्ड। अब डबल एज स्वॉर्ड का हिंदी में मतलब होता है दुधारी तलवार। दुधारी तलवार मतलब जिसमें दोनों तरफ धार हो, मतलब कि भैया तुम खुद को भी काट लो और बगल वाले को भी काट लो, तुम्हारी मर्जी सो करो। Right? So something which has got advantages as well as disadvantages is called as dudhari talwar, right? Like for example, owning a car is like a double-edged sword. It can be a blessing in disguise. इसके लिए एक और phrase भी है, वो है blessing in disguise. What is blessing in disguise? I mean, people see it as a advantage, but you only know that whether it is an advantageous, I mean, thing वैसे or blessing not. in disguise अलग है। blessing in disguise का मतलब है छुपा हुआ वरदान। Like for example, your nails are a blessing in disguise actually. ये जो हाथों में नाखून होते हैं ना, they are a blessing in disguise. वो आपको वरदान है लेकिन पता नहीं है क्यों। नेल से क्या क्या करते हो आप जानते हो, है ना। आपके पास कोई हथियार नहीं है तो नेल ही है, ले बेटा ले हो गए तेरा हैप्पी बर्थडे। सो लाइक दिस, नेल्स आर नथिंग बट कुछ खुजाल लाओ तो ऐसे ही कुछ तो उठा नहीं सकते। सो यू नो समथिंग विच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग बट इट इज इन डिसगाइज। डिसगाइज मतलब छुपा हुआ वरदान। सो इट्स डिफरेंट एक्चुअली, बट दीज फ्रेजेस कम वेरी हैंडी। For example, good infrastructure is a blessing in disguise. Good roads are blessing in disguise. हाँ या नहीं? So when you are using these kind of structures in your writing, it becomes very easy for you to write any essay. And learning these phrases can actually make a huge difference to your overall writing, isn't it? Yeah. Okay. So firstly, let us discuss how information technology will affect So let's look at this topic. और इसको हम पहले समझते हैं. And I'll also tell you how to think about an essay, how to write it with the help of certain structures. अब देखो, whenever you read an essay, try to divide your essay into two parts. The first part is background information, and the second part is the question. So if you look at this essay, this is the background information. What I am writing in, putting in blue is all background information. It is not the part of the question. It is just about the background of the essay. In last 20 years, there have been significant developments in the field of information technology and IT. 20 साल में बहुत development हुआ है. For example, World Wide Web, communication by email. However, future developments in IT are likely to have more negative than. So this is all background information. This is the question, right? This second part is the question. If बात हो रही है यहाँ पे बहुत ही clear cut future developments के बारे में.
So this is a like, background information. Then this is one statement which can be true or false, and you have to decide about this, right? You have to decide whether this is true or false, and then you have to write an essay. So whenever you read a question, you should always divide the question in these parts. The first is background information, like the context that IT has brought about huge changes. But the question is not about IT. The question is about the future developments in IT. Now, suppose if you write about IT in this question, you will go very wrong, isn't it? Yeah. Because the question is not about the use of IT. The question is about the future developments in the field of IT. So, are future developments great or not is something that you have to decide, right? So, you have to analyze the question very properly. So, now, whenever you think, whenever there are two sides to it, you can always make a T table, right? Like this. If I just give you a glimpse of a T table, it will look like this, right? So, future is good, future is bad. Okay, tell me, how can future be good of IT? Not now, future developments. If you want to say future of IT is good, what points can you speak about? What are the arguments you can make? The field of medicine, I mean, Yeah, you using can. robots. Yes, so Both generally what you can helping. see is, you can say is that we can predict future only on the basis of the current timings. How is the thing useful? You can, so in the present times, application of IT is on the rise. सो वी कैन से दैट, है ना? अभी भी ऐसा हो रहा है तो आगे जाकर होगा. सो फ्यूचर विल बी ब्राइट. नाउ इतने से तो लिख देने से काम नहीं होगा, तो क्या बताएं भैया, कहाँ पे देखा आपने आईटी बहुत अच्छा है? तो ऐसे ऐसे आप बोल रहे थे. Advancement in artificial intelligence can lead यस, to be मेडिसिन, helpful. आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपको एजुकेशन, ऐसे चार पांच एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो कि फ्यूचर बहुत अच्छा है. अब चूंकि ये पैसेज, ये ऐसे ऐसा है जिसमें दोनों साइड बोलने का मौका है, तो फ्यूचर इज बैड के बारे में भी आप बोल सकते हो, है ना? तो फ्यूचर इज बैड कैसे बोल सकते हो भैया? तो भैया साइबर क्राइम्स, है ना, मनी फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, Privacy breaching. प्राइवेसी ब्रीचिंग, है ना? अब आप देख रहे हो कि इस वाले टॉपिक के अंदर दोनों साइड में ही काफी सारा मसाला है. तो अब आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि आप कौन सा साइड लेना चाहते हो. ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है उसने आपको कोई फोर्स नहीं करा कि एक साइड लो. आप दोनों भी ले सकते हो. आप एक मिडिल पाथ बोल सकते हो, और आखिरी में ये बोल सकते हो कि आईटी इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट. भैया ये तो कार को थोड़ी ना पता है कि एक्सीडेंट करना है, कि आपको उठा करके यहाँ से आपके घर तक ले जाना है. तो कार थोड़ी ना जानती है, तो आप जानते हो. आपने एक्सीडेंट करवा दिया, बोला जी कार खराब थी. तो इट इज लाइक दैट, इजंट इट? सो for in such situations you can use these phrases: information technology is like a double edged sword, future developments in the field of computing can be boons or banes. अब ये boons और banes भी एक पका पकाया फ्रेज है. boon मतलब वरदान, और bane मतलब अभिशाप, right? So it has got both the sides is what it is trying to say.
Yes. So always, whenever you get this kind of topic, wherein there are two sides, make a table of this sort. Okay. This table will give you clarity कि भैया मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ. All right. So as you can see, now you can see that it is very clear. You know, भैया अगर मैं मुझसे पूछो तो मुझे लगता है फ्यूचर तो अच्छा ही होगा, है ना. हम बुरा क्यों बोले, मतलब बुरा क्यों बोले, मतलब मेरे को यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स लग रहे हैं. If I have to take a side, I'll say our future of IT is going to be good. All that we need to do is we should be a little cautious. हाँ या नहीं. तो ये स्टोरी बन सकती है कि हाँ भैया उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम कॉशियस रहें तो आईटी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, छोड़ तो नहीं सकते, है ना. So now if you read this essay, it has got this kind of structure where you are very subtly going towards one side by telling that दूसरी साइड में भी थोड़ा दम है, लेकिन उसमें कम दम है. Okay, so it has taken examples. If you look at this, firstly, let us see how information. So look at the introduction first. Future developments in the field of computer can be boons or banes. Now, boons or banes, जैसे मैंने आपको बताया, वरदान या अभिशाप दोनों हो सकता है, depending on how the advanced knowledge is applied. Now, this is neutral statement. Up till now, the writer has not shown his side. अब यहाँ पे उसने अपना साइड बताया. दिस ऐसे विल डिस्कस पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क. अभी भी उसने एक साइड नहीं ली, बोल रहा है पोटेंशियल बेनिफिट्स रिस्क दोनों बताऊंगा. लेकिन अगेन लुक एट दिस इज अगेन अ वेरी गुड फ्रेज, इजंट इट. कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला ऐसे है और उसमें आप न्यूट्रल रहना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज. So do you think that learning these phrases is a good idea? Because they will act as a tool. Like आप लोग कब वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग करते हो या कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो कई बार कुछ छोटे छोटे लिखे लिखाए कोड्स होते हैं, है कि नहीं होते. उनको आप यूज करते हो और आपकी गाड़ी चल पड़ती है, आपको पूरा नहीं चलाना पड़ता. हाँ या ना. या आप Agree, sir. या आप अपना जो भी गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो आप एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट ला करके, सपोज बैटरी खराब हो गई तो बैटरी बदल दो, बाकी गाड़ी ठीक है. So similarly, these are small components of the essay. And if you learn and master phrases, you can write any essay. दो ही चीज तो चाहिए, एक तो एनालिसिस कैसे करना है और दूसरा लिखना कैसे. तो एनालिसिस कैसे करना है, तो एनालिसिस कैसा डबल टेबल बना के करना है. टॉपिक को पहले समझना है कि भैया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है. एक बार क्लैरिटी मिल गई कि क्वेश्चन कंपैरिजन वाला है तो टेबल बना लीजिए. इस साइड में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस साइड में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, देख के समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से साइड में जाना है. और उसके बाद क्या बचता है, सही फ्रेजेस यूज करके उस ऐसे को लिखना, है ना. और हर एक ऐसे के अंदर कुछ पैराग्राफ होंगे, तो पैराग्राफ को कैसे स्ट्रक्चर करना है वो अपन ने भी देख ही लिया. 5 C's: क्लेम, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्क्रीट एविडेंस, कमेंट्री, कंक्लूजन. इज दिस क्लियर? डू यू Yes, थिंक sir. राइटिंग एन essay इज अ वेरी इजी टास्क? Isn't it easy? Just that you have to have this map in your mind. जब अपन यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं और अपने पास एक गूगल मैप बना हुआ है, तो चाची बोल रही है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, डांस करो, बैठ जाओ, खाना खा लो, जो भी वो बोल रही है वो करते जाते हो आप, राइट. सो इफ यू हैव अ गूगल मैप फॉर राइटिंग योर essay, you just have to follow the चाची, isn't it? पता नहीं आदमियों की आवाज इतनी खराब क्यों होती है कि वो गूगल मैप में भी लेते नहीं है. Anyways, so the whole point is this is like having a Google map for writing your essays, right? And you should always keep this chachi on. I mean, the structure should be ready in your mind कि भैया ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, so that you reach to your destination in the shortest possible time, in the easiest possible way. All right. तो क्या बोल रहा है, फर्स्टली लेट अस डिस्कस हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट एजुकेशन. तो इसने एग्जाम्पल से ही शुरू कर दिया. क्यों? एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मेरे को अच्छा लग नहीं रहा, यहाँ पे इसको पहले ही बता देना चाहिए था. दिस ऐसे विल डिस्कस पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क. अच्छा, बेनिफिट्स और रिस्क बोल रहा है, तो ये बेनिफिट डिस्कस विल अफेक्ट एजुकेशन, विल विल ease education, will automate education, will facilitate education, facilitate
डिस्टेंस लर्निंग, ऐसा कुछ बोल सकते थे, है ना। फैसिलिटेट, 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 फैसिलिटेट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, फैसिलिटी की स्पेलिंग फैसाइल से बनता है ना, फैसिलिटी, हाँ तो फैसिल, FAC. ओके। FAC. हाँ फैसाइल से फैसिलिटेट, अभी भी गलत बोल रहा है भाई। फैसिलिटेट, अच्छा फैसिलिटेट, मैं तो क्या लिख रहा था, मैं क्या लिख रहा था, अच्छा FA, तो मैंने ठीक तो कर दिया था, फिर भी बुरा मान जाता है गूगल, अच्छा मान गया था ना, देखो। There is extra gap in between ओके facilitating. ओके ओके, हाउ इट विल फैसिलिटेट एजुकेशन, मतलब मेक इट इजी, फैसाइल मतलब होता है इजी, तो उससे बोल रहा है फैसिलिटेट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इन द करंट टाइम्स, इन फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ, इन फ्यूचर मतलब करंट की बात से लेकर के ये फ्यूचर में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही फ्यूचर का है ना भैया, तो इसने ऐसे तीर कमान उठाया और बोला फ्यूचर में जाके देखो, लाइक दैट, सो ही टुक base in the current and then about the future, would make technology more human centric. So for example, and then he has given, so secondly, so he has taken, अब ये एक और तरीका है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, क्या करो, दो तीन नए नए फील्ड्स उठा लो। पहले उसने एजुकेशन उठा लिया, फिर उसने मेडिसिन उठा लिया, फिर उसने क्या किया, कैच क्रिमिनल्स उठा लिया, इजियर टू इन द फील्ड ऑफ क्राइम कंट्रोल, है ना, देखते ना क्राइम, क्राइम टाइम, तो ऐसी क्राइम कंट्रोल वाली स्टोरी बना दो कि जी अपने वो अलार्म से अलार्म लगा देते हैं ऑन ऑल दैट, दस स्मार्ट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्कैनिंग सिस्टम, ये सब, इन शॉर्ट डेवलपमेंट ऑफ इन IT आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज क्राइम रेट, तो सब जगह फायदा फायदा फायदा। हाउएवर इट इज ट्रू दैट, अब इसने थोड़ा यू टर्न मारा कि बुराइयां भी तो है ना, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपने वो दूसरी बात को भी जस्टिफाई कर दिया है। These developments can be harmful as well. For example, there can be a rise in online frauds और सब तो सब कुछ कवर हो गया, ऐसा नहीं लग रहा कि बंदा एक ही साइड देख रहा है ना। अब देखो उसका इंट्रोडक्शन न्यूट्रल था, तो उसको उसने जस्टिफाई किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी अ बून फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और उसके साथ में इफ क्लॉज लगा दिया। वैसे जब इफ बीच में आता है तो कॉमा नहीं लगता, ऐसा रूल है, ठीक है, तो अपन इस कॉमा का हटा दो। If such knowledge is applied for benefiting the humanity rather than harming the humanity, है ना, कि भैया नॉलेज तो नॉलेज है, उसको थोड़ी ना पता है, चक्कू को थोड़ी ना पता है, सो लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट इट इज। इन द सेम वे यू कैन ऑलवेज राइट एन ऐसे, सो जब भी आप ऐसे पढ़ो तो ऐसे मत सोचो कि मेरे को याद करना है ये, आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि इसने कैसे सोचा, इसने क्वेश्चन के साथ कैसे जस्टिस किया, पहली बात ये सोचो। दूसरी बात ये सोचो इसने अच्छे अच्छे वर्ड्स कौन से यूज किए, जैसे यहाँ पे देखो तो लोकेट क्रिमिनल्स एंड देयर अकम्प्लाइसेस। अब ये अकम्प्लाइसेस जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल चाची से पूछ लेना कि भैया अकम्प्लाइसेस क्या होता है, तो गूगल चाची बताएगी जी देखो जी अकम्प्लाइसेस मतलब चोरी में जो साथ देने वाले लोग होते हैं वो अकम्प्लाइसेस कहलाते हैं, चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं ना, तो मुसारा भाई इज कॉल्ड एज अकम्प्लाइस। Accomplice means a person who helps another to commit a crime. So who is accomplice? मुसेरा भाई। So like this you can write down. Accomplice मतलब मुसेरा भाई, ऐसा लग के दीवार पे लगा दो आप, आपकी मौसी का बेटा आएगा तो आपसे लड़ने लगेगा, तो भाई भाई तो भाई तो बोला है मैंने, right? So accomplice means somebody who helps you in crime. Like this you can use these essays to develop your vocabulary as well as learn some structures to write in an easy way. Isn't it the easiest way to learn writing? दूसरा होता है कई तलवार लेके निकल पड़ते हैं जी, मैं तो पानीपत का तीसरा युद्ध पहले दिन ही लड़ूंगा, हो जा शुरू पत्थर तनातन तनातन तनातन, ऐसे 450 वर्ड्स का ऐसे लिख देते हैं, तो बोलते हैं जी ठीक करके बताओ। मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है जब मैं देखता हूँ वाला ऐसे, भाई मैं क्या क्या ठीक करूँ, ऐसे ना करो आप। The whole point is go in a simple way, isn't it? The simple formula is good artist copy, great artist read. बचपन से आज तक आपने कोई भी चीज बिना नकल करे सीखी है, बताओ। अरे भाई मेरी नकल नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे हो, नकल तो नकल ही है, मैंने भी नकल ही करी है किसी की, उसमें गलत क्या है। मैं कोई पेट से कोई ना लेके गया था, माँ ने मेरे को कोई इंग्लिश का जीन दे दिया, जा पुत्र
जाके IELTS पढ़ा. So we all develop by looking at others, isn't it? So you have to take some good source and learn from it. Yeah. It's very simple and the easiest way to learn something. Otherwise, we keep on committing mistakes and life is too short to learn from our own mistakes. खुद ही गलती कर करके कब तक सीखते रहेंगे भाई तू गलती कर मैं तेरे से सीखूंगा. So that's a good way. So you can look at all the essays which are written nicely and learn from them. हाँ कि नहीं विकास? वरना क्या होगा? Yes, sir. आप लिखोगे 2-4 ऐसे, मैं बोलूंगा जी ये गलत वो गलत, आप हो जाओगे डीमोटिवेट, आप बोलोगे सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता, क्या सब गलत गलत बोल देते हो आप, isn't it? So first thing you should do is learn from some good samples. Yeah. And try, this is how you should learn. So what is your task today? I want you to focus only on these essays. To what extent do you agree or disagree वाले जितने भी ऐसे हैं, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपको इसमें से सारे essays को स्टडी करना है. Both views 3, both views 4, कहाँ गया 4, 4, both views 5, ये आ गया 5, both views 6, both views 7, both views 8, आया कि नहीं आया? नहीं आया. Both views 7. तो both views वाले इसमें कितने ऐसे हैं? 7. इन 7 essays को आपको क्या करना है? रिवर्स इंजीनियरिंग कि क्वेश्चन क्या था और बंदे ने क्या लिखा और इसमें कौन से अच्छी अच्छी बातें हैं. देखो, द डिबेट ओवर नेचर वर्सेस नर्चर इज नॉट येट सेटल्ड. कितना सुंदर फ्रेज है, नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर मतलब नेचर कॉल वाला नेचर नहीं, नेचर मतलब प्रकृति, नेचर, और नर्चर मतलब सिखाना. इज नॉट येट सेटल्ड, छोटा सा इंट्रोडक्शन. एंड फिर हमेशा सेकंड सेंटेंस वाइल्ड वाला डाल दो. तो ये ना पकी पकाई खीर है, पहले दूध डालो फिर चावल डालो फिर पकाओ फिर शक्कर डालो फिर खिला दो. तो दिस इज व्हाट हाउ यू मेक खीर. ऐसा तो है नहीं कि आज मंडे को अलग खीर, ट्यूसडे को अलग खीर. रेसिपी और तरीका सेम रहता है. सेम इज द केस, वॉट एवर इज द टॉपिक यू हैव टू मेक खीर. पहला सेंटेंस ऐसा, दूसरा सेंटेंस while some people opine that da 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 da, others argue that da 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 da. This essay will discuss da 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 and do da 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 da. Like this, if you follow a structure, आपके दिमाग में एकदम फिक्स होगा. पहले स्ट्रक्चर, पहले पैराग्राफ के पहला, so like this I want you to analyze these essays and whatever number of essays you can rewrite. I won't say कि 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, जितने ज़्यादा आप लिख पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मिलेगा, है नहीं. अब ये नहीं बता सकता कि 10 लिखने पे होगा या 5 लिखने पे होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. कम से कम 2 ऐसे तो लिख के भेज ही दो जो आपने ना लिखे हो अभी तक. कैसे वाले? टू व्हाट एक्सटेंट, बोथ व्यूज वाले. ऐसे करके हम 4-5 दिन में अलग अलग टाइप के एसेज लिखेंगे और पढ़ेंगे. Okay. तो आपको जितने भी टाइप के एसेज हैं, वॉट एवर इज द नेचर ऑफ द एसे, you know, you will have a template for them, you'll have a structure for them, you'll have a Google map for them, and that will help you to write on any such topic which is similar to that topic. Yeah. So this is what I want you to do today. I want you to analyze this particular document, and I'm going to upload this lecture so you can always see through this also. But this is the task for you today. You are going to write at least 2 essays where you are discussing both views. Okay, Yes. are we Yes, sir. clear about it? Can you Okay, write sir. this much? Yes, sir. Tomorrow when you send it, I'll be checking it. We are not going to do the class tomorrow. We are going to do it day after tomorrow. So you have got tomorrow's time to write, read, analyze, work on these essays. Day after tomorrow, we are going to discuss the next type of essay. Sure, sir. Okay, see you then. Thank you so much. Sure, sir. Okay.